What is up YouTube? What's going on? Welcome back to my YouTube channel. Today is another interesting day and apologies for delay in my vlogs. If you've seen my last vlog, you know why these delays are happening, because there's so much happening and finally the lockdown is kind of off. We can't straight start riding. We still need e-pass, but I just got a news that e-pass might be not required for interstate. Not too sure, don't quote me on this. So as you can see behind me, there are three jackets. One is the latest variant of stormevo version 3, which is the Noctex. The second one is the stormevo, which you've seen in my Konkan ride videos. If you've not seen, please check those videos out. You will see how well this jacket performed. And the first one is the urban jacket, which is the camo theme. I really like these three jackets. I also have the Stealth Evo, which is less meshed. It's more polyester. It's more of a 4-season jacket. But I'm going to talk about the mesh jackets. The reason I'm comparing this with the earlier jacket, because stormevo is not discontinued. So do not think that because of Noctex, the stormevo has been discontinued. The only difference in Noctex is basically it's highly visible during night time. Literally everything remains the same. But let's go and have a closer look. Okay, so urban ko maine rakh diya hai side pe. Because we are right now comparing the storm. Both jackets have respective pants. So दोनों की pants भी similar styling में है. This is a storm with Noctex and as you can see the difference. बहुत लोगों को ये भी confusion थी. जिन लोगों ने ये invest किया है, they were like ये पहले क्यों नहीं launch हुआ? But it's the same. मैं आपको भी similarities और differences दिखाता हूँ. थोड़े differences है. So basically उनको quickly capture करते हैं. Both come with level 2 armor by Nox. They have chest protectors which you can buy separately. दोनों की liners और rain covers वो भी मैं आप लोग को properly बताऊंगा. ये Noctex के सारे material use किए गए हैं इस जैकेट पे. इस जैकेट पे भी reflective piping लगी हुई है. You can see even the badging of Rynox actually glows. So that's really nice. And even these reflectives are pretty sharp and loud. So even this is decent enough. बट ये हाईली विजिबल है नाइट टाइम के लिए. सो अगर आप एक नाइट राइडर है या आप एक सिचुएशन में जहां आपको विजिबिलिटी मैटर करती है बहुत, देन आप ये जैकेट ले सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस इन दीज टू जैकेट्स. रीइंफोर्समेंट्स आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर है. दोनों के शोल्डर पैड्स सेम है. एवरीथिंग इज़ नियरली सेम. नाउ कमिंग टू द कॉलर, इसकी कॉलर वेलक्रो की आती है एंड दे हैव 3-step एडजस्टर जो 4 सीजन जैकेट्स में ज़्यादा करके पाया जाता है. एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि यू कैन रिमूव दिस एंड यू कैन जस्ट टैग इट हियर. इसको आप यहाँ पे फंसा सकते हो तो ये फ्लैप नहीं करता. बेसिकली ये जब निकालते हैं तो ये ऐसे रहता है. सो जस्ट फॉर दैट दे हैव डन दिस चेंज एंड आई एम श्योर ये चेंज उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि जो चेंज इस पर नहीं हो पाया है फॉर द पास्ट लॉन्च, अगर न्यू लॉन्च वेरिएंट लॉन्च हो रहा है तो उसमें थोड़े चेंजेस करनी चाहिए. एंड डेफिनेटली दीज मस्ट बी ऑब्वियसली फ्रॉम द फीडबैक फ्रॉम राइडर्स. मुझे इस जैकेट से ज़ीरो कंप्लेन है. मैंने इतना इन्जॉय किया इस जैकेट को ड्यूरिंग माई कोंकण राइड एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतनी गर्मी थी बट जितनी बाइक चल रही थी एंड जिस हिसाब से इसमें से विंड फ्लो पास हो रहा था आगे से पीछे से, इट वॉज अमेजिंग. सो दैट्स द थिंग. आई डोंट थिंक सो राइनॉक्स हैज़ चेंज एनी वेंट सिस्टम. दोनों का सेम है. पूरे आर्म्स पे मैश लगा हुआ है. सेम लेवल ऑफ मैश विच इज़ इन दैट जैकेट. एक पोल डाला था कि इस जैकेट ने मुझे अब और कंफर्म कर दिया है कि मैं एक एडवेंचर बाइक खरीद लूँ. आई एम सो हैप्पी विद दिस जैकेट बिकॉज लुक्स रियली नाइस. So this is the advantage of Rynox gear and why I call it a game changer is because they upgrade their jackets and their pants and all their products often, which is very nice. This is a very known company in India और प्राउड मेक इन इंडिया ब्रांड है. एंड एक और चीज़ इस ब्रांड की खासियत ये है कि ये जितने सालों से चल रही है ये अपग्रेड हो रही है और बेटर हो रही है. कंप्लेंट्स कम होगी डेफिनेटली जितने लोगों ने राइनॉक्स यूज़ किया है. मैं जितने व्लॉगर्स को भी जानता हूँ और मेरे पर्सनल फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विद राइनॉक्स. ऐसा नहीं है बिकॉज आई हैव इट तो मैं इसके बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ, बट ओवरऑल दीज जैकेट्स आर रियली डूइंग वेल इन इंडिया एट लीस्ट. As you can see, the inside of the jacket is similar for both of them. Okay, comes with a dedicated pocket out here, right? This is where you can remove your chest protectors from. So there is dedicated one extra pocket. Outside they do have 2 pockets. Collar for this jacket is really nice and soft, so that is not a problem. Same one goes with your previous variant. Cuffs are also soft and nice. You won't feel any irritation, especially near your wrist area. The zips are
superior, very thick and nice. They do have fasteners given on your forearm area as well as your bicep area. Now let's compare these jackets, how they look from the rear. As you can see, यहाँ पे 4 सीजन की तरह ही स्ट्रेच बैंड्स दिए गए हैं विच हैज़ इलास्टिसिटी. मैंने राइनॉक्स के बैक प्रोटेक्टर की तरह और कोई जैकेट्स में बैक प्रोटेक्टर देखा नहीं है. काफ़ी थिक है, काफ़ी सिक्योर्ड है. इनफैक्ट दे ऑल्सो हैव इंश्योरेंस स्कीम जो बहुत अच्छी है इन जैकेट्स पे. आप वेबसाइट पे देख सकते हैं. देयर आर सम टेस्टिमोनियल्स पीपल हैव मेंशन्ड. नाउ लुकिंग एट द बैक, अगेन दे आर सिमिलर. द कट एंड स्टाइलिंग इज सिमिलर. नॉकटेक्स पीछे भी यूज़ किया गया है. एज यू कैन सी दैट एंटायर ग्रे थिंग इज नॉकटेक्स. एंड यहाँ पे फैब्रिक है, सो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ये लाइंस, पर यहाँ पे पूरा वो पैनल रिफ्लेक्ट होगा विच विल लुक रियली गुड. एज यू कैन सी अब इस पे प्रिंट आ गया है एंड दिस वाज रबराइज्ड, सो दिस इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. राइनॉक्स के सारे जैकेट्स वारंटी के साथ आते हैं. एज यू कैन सी नॉक्स गिव्स देयर वारंटी. नॉक्स इज अ वेरी गुड ब्रांड मेकिंग आर्मर सिंस सो लॉन्ग. सो ये CE सर्टिफाइड जैकेट्स है. इफ़ यू आर इन टू टोरिंग एंड इफ़ यू नीड वेंट्स, इनफैक्ट कोल्ड रीजन के लिए भी ये डिसेंट है. बट इफ़ यू आर गोइंग इन एक्सट्रीम कोल्ड, जो मैंने अपने जैकेट रिव्यूज़ में भी बताया, अगर आप सब जीरो एंड ऑल दैट जा रहे हो, देन यू शुड गो फॉर द स्टेल्थ वेरिएंट विच इज़ रियली नाइस बिकॉज स्टेल्थ इज़ मोर पॉलिएस्टर, लेस ऑफ मैश. इनफैक्ट उनके फ्लैप्स खोल के आप वेंटिलेट कर सकते हो विच इज़ वेरी नाइस. नाउ क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द एड-ऑन्स. यू गेट अ रेन कवर विच इज़ quite visible again, but I think this is what they have changed now. This is a game changer. And usually you get is something like this. This is really cool. तो इसमें बहुत सारे fonts है जो अगर आप मूव करोगे तो आपको विजिबिलिटी दिखेगी. काफ़ी डिसेंट लेवल का विंटर लाइनर है. या आप उसको नॉर्मली भी पहन सकते हो. बट द गेम चेंजर इज हियर. यस, Rynox has introduced a new winter liner called the Surge. The Surge winter liner, which is more of a fleece pattern. The polymer used is really superior and ये longevity के लिए सही है and it comes with the hoodie. Comes with the rubberized branding here. This is diamond quilted, पर ये जो material है थोड़ा stiff है, ये soft है. So this is more like a down jacket क्योंकि इसमें पॉलीमर ऐसा यूज़ किया है. एंड इनफैक्ट इट्स अ रिसाइक्लेबल पॉलीमर देव यूज्ड. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, सेफ्टी वाइज, हाई विजिबिलिटी. राइनॉक्स इज रियली चेंजिंग देयर गेम. आई विल स्वेट. ऐसे ही मेरे को पसीना आ रहा है. पंखा बंद है, सब बंद है इस रूम में. सो इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज पॉसिबल क्योंकि मैं इतनी गर्मी में मुंबई में लाइनर पहन रहा हूँ. So yeah, this is how smart this jacket looks. It's fluorescent green from inside. It is already feeling very hot, and as you can see, it comes with a nice hoodie, जो बहुत सही है. So अगर आप विंटर में जा रहे हैं, ये लाइनर आप नॉर्मली भी पहन सकते हैं एंड इसके ऊपर यू कैन वेयर योर राइडिंग जैकेट एंड यूर सॉर्टेड. आप क्लियरली देख सकते हैं द फिट इज फैंटास्टिक. दिस इज द बेस्ट पार्ट. Elbow guards, perfect positioning. Shoulder guards, perfect positioning. Even the metal plate on top, metal guard or whatever you want to call it, वो भी perfect positioning पे है. देख सकते हैं दोनों side. The whole feel and fit is perfect. पीछे से आप लोग को दिखाता हूँ. This is how it looks. Now I've zipped it up all the way. Rynox can provide fasteners above the waist. जैसे दूसरे ब्रांड्स में भी है, वो बहुत बेनिफिशियल होगा. People who have a thin waist, यहाँ पे काफ़ी लूज रहेगा. So you can tighten this. So while riding, it's really nice. You know, it can take care of it. Yeah. So basically, riding jacket is not only to protect your elbow, shoulder, back, and chest area. It is also for your skin, which is very important. If you notice, if you don't wear a jacket and you go on highways, you actually start feeling stones and pebbles. जो आपको पहले आदत हो जाती है लेने की, but after wearing a riding jacket, you will realize कि shit that actually affects you a lot. So it's very important. Fitting बहुत सही है. As you can see, the elbow armors and everything is really at the place, which I really like. Now this jacket is getting me excited to get a nice adventure motorcycle or at least kind of a touring motorcycle so that I can start touring. And guys, seriously, jacket पहनने के बाद, ये वीडियो करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो लॉकडाउन है ना, ये मेरी तरह जितने भी राइडर्स हैं जो घर पे रुके हुए हैं, I understand what they're going through, but soon we shall ride, and that's what the excitement is all about. इसकी राइड रिव्यू की आपको ज़रूरत नहीं होगी because I've already done nearly 1000 kilometers on this. Check my Konkan rides. That's where I used it. I really loved it, and the feel is same. It's just that it's going to be very reflective in the night.
for that you can also check the website. Rynox की एक और खासियत है, being softer, break-in ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. So couple of rides and this jacket is good to go. I hope you guys enjoyed this video, and if you did, you know what to do. Press the thumbs up button, subscribe to my channel, do share and press the bell icon, because I get a lot of messages saying that we never get your videos on time. So I don't know what's happening with YouTube algorithm. So please press the bell icon, and as usual, eat well, sleep well, be good. Signing off, Raj. Bye.